doubt till question number 25, please ask, or we will start. Otherwise, we will start from the question number 26. Question number 26. Now see the question number 26. Anyone please read the question number 26? The surface area of a cube is 1176 centimeter square. Find its volume. Okay. So the volume of cube is given here. Volume of cube is equal to 729 centimeter cube. And what is the formula for the volume of cube? Volume of cube. Yuvraj, can Yes, you sir. please tell me what is the formula for the cube? Volume of cube. A3, A square cube, A cube. What do you mean by a cube? Sir, side square. Side cube. Sir, may I? Yes, Yes. okay, side Yes. cube. So the side, the volume of cube is 729, and the formula for the volume of cube is side cube. This is 729. So the side is Sir, equal you to, are doing Sir, it is question number 27. 27. अच्छा 27 नंबर गलत लिख दिया. Okay. टिल अच्छा अच्छा ओके ओके 27. अच्छा चलो पहले 27 कर लो फिर 26 करेंगे. नो प्रॉब्लम. So the side is cube root of. Just I read the question number 27. Volume of cube is 729. Find its surface area. So, in volume and surface area, the common is the side. So first we have to find the side of a cube. Then we find the surface area of the cube. Now the volume of cube is equal to 729. Side is and volume of cube is side cube. So side cube is equal to 729. So side is equal to cube root of 729. Anyone know that what is the cube root of 729? So 9. Yes, 9. 9 is the cube root of 729. Okay. Now we have to find the surface area. So the surface, and see, surface area means that every time we have to find the total surface area. सर टोटल सरफेस एरिया के लिए सिर्फ सरफेस एरिया लिखा रहता है. इफ यू हैव टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया देन दिस इज given this is written in your book. Otherwise the surface area is written here only. Surface area means the total surface area. So what is the total surface area of cube? Manjeet? Sir, 6A. 6 6 A. square. Yes, Yes. this means that 6 multiplied by area of face, and we know that the face is square in shape, so the area is side square. A is basically called the side, or we have to write here also a cube. So the surface area is 6a square. So the surface area is equal to 6 multiplied by 9 square. So fast multiply it. 81 multiplied by 6. Got the answer? See? Visible? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. So this is the 27th question. First we have to find the side of the cube, then we have to find the surface area. And if the surface, if there is a confusion, because there is two type of surface area. One is the lateral surface area
and second is the total surface area. But every time when you see uh, surface area in question, then you have to find the total surface area. Otherwise, the lateral surface area is mentioned, but total surface area is never mentioned in the cube. So, ध्यान रखना है, this is very much important कि if the question is surface area, it means you have to find the total surface area. Clear? Copied? Yes, sir. Good. Yes, sir. और any doubt, किसी को कोई doubt हो तो पूछते रहना please. Now the question number 26. Question number 26 is the surface area of cube is 1176. Now the surface area is given here and we have to find the volume. So it's very simple question, not a very difficult question. So surface area, it means that surface area means that the total surface is here. Surface area is equal to 1176. And we know that the formula is 6 side square is equal to 1176. Okay. So now the side square is equal to 1176 divided by 6. Now cancel it fast. 196. 196. Good. So the side is equal to under root 196, which is equal to 14. yes. Good. So the 14 centimeter is the side of a cube. So now fast, volume of cube is equal to side cube. So multiply it 3 times and tell me what is the answer for this. 14 cube is what? 2744. 2744. Okay. Cube. Now this is the 26th question. Clear? कोई doubt है तो please पूछो. In this, and you every time know, see surface area and volume. इन दोनों में जो common चीज़ है, this is the side. So if the surface area is given, we move to the side and then find the volume. Or if the volume is given, then we have to move to the side and then find out the surface area. Is that clear? इन दोनों terms के अंदर जो common चीज़ है, this is the side. If side is there, then we are able to find the surface area as well as the volume. ठीक है? कोई doubt है अभी तो पूछो. Otherwise, now we will move on next question. Now Manjeet, read the next question, 28. The dimensions of a metal block are 2.25 meter by 1.5 meter by 27 centimeter. It is melted and recast into cubes, each of side 45 centimeter. How many cubes are formed? Good. So if the length of the so 28th question, now the dimension of the metallic block is this. Okay, it is melted to recast into a cube, each of side 45. How many cubes are formed? Okay. So 28th question. So anyone has any idea about this? कि ये जो डायमेंशन ऑफ मेटल लिखा है, डायमेंशन ऑफ मेटल ब्लॉक, ये लिखा है हमारे पास 2.25 इंटू 1.5 इंटू 27 यानी
0.27. 0.27. Now it is also in meter. So what is the shape we get? Which shape is Cuboid. Cuboid. yes, this dimension represent the cuboid shape because there is a length by breadth by height. Means the length, breadth and height is given here in the form of this. Okay. And the question is we have to melt it. We have to melt it and recast मतलब दोबारा से बनाना और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में बनाएंगे. द डायमेंशन इज 45 सेंटीमीटर. सो बेटर हियर we take 220 sorry in centimeter we can take the units in centimeter. This all are in centimeter. Okay, clear? Yes, sir. And dimension of cube is equal to, तो डायमेंशन ऑफ क्यूब में तो सिर्फ साइड बाय साइड लिखा होगा. तो दिस इज 45 बाय Yes, sir. 45 बाय 45 बाय 45 एंड दिस इज आल्सो इन सेंटीमीटर. हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या चीज इन दोनों में सेम होगी. क्या चीज Sir, सेम होगी? volume. Good. Yes, very nice, very true. The volume is same because same metal means the block of metal and same metal is used to melt and recast it into a small cubes. So the uh, volume of number of cubes हमें निकाल. All Yes, number of cubes is equal to volume of metal. Volume of metal block Metal, by don't repeat, volume of cube. please. Metal, volume of metal block upon, don't repeat. This is actually recorded now, so that is why don't repeat the solution. Volume of metallic block upon volume of one cube. cube. So it will be 225 multiplied by 150 multiplied by 27 upon 45 multiplied by 45 multiplied by 45. Now you can cancel this and find out the number of cubes. Do your own, please. Sir, 10. Just a moment. Sir, 10. 10 तो नहीं लग रहा है मुझे, 10 से ज़्यादा आना चाहिए. लेट्स सी, फिर भी मैं देख लेता हूँ. हाँ 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 हाँ. Yes, yes. 9 2s are 18 and then 45, 25, 5, 5. Yes. The answer is number of cube is equal to 10. Yes. Exactly right. जिसने भी आंसर दिया वो बहुत परफेक्ट आंसर दिया. The answer is the number of cubes are 10. If we cast a metal block of dimension 2.25, 1.5 by 1.27 to make a 10 cubes. Clear? कोई confusion है इसमें? No, sir. Good. No, sir. Now Shivani, क्या नाम है तुम्हारा? भूल गया. Shivani ना? Shivani, read the next question, please. Yes. 29. If the length of each edge of a cube is doubled, how many times does its volume become? How many times does its surface area become? Good. Okay. If the length of the edge of a cube is double, how many times the volume become? Okay. So let the edge
be x, and double double the edge, double the is equal to, डबल मीन्स दैट डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 2x. Okay, now just draw a line. First we compare the volume, and then we compare surface area. Okay, now uh, 1, and this is the 2 because the doubled, this is the second. So volume, how many times, so we can just how many times check. So the volume of just compare it by making a ratio. V1 upon V2 is equal to side cube upon side 2 cube. Yes, so it will be x x x cube upon 2x cube. क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लिखेंगे, इसको यहाँ लिखता हूँ, इज इक्वल टू x upon 2x cube. X and x is cancelled, we get 1 upon 8. So the new volume will be 8 times. Now is it be visible now? Yes, sir. 1 upon 8, we get a ratio comparison. We are comparing the volume, then we get 1 upon 8, means the new volume will be 8 times. And now the comparing the surface area. So SA1 upon SA2 is equal to, the formula for the total surface area is 6 side 1 square and then 6 side 2 square. Now 6 and 6 is cancelled. Just put the side here, x square upon 2x square. So it will be x upon 2x whole square. So x and x is cancelled, so it will be 1 upon 4. New surface area will be 4 times. Clear? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछोगे, और नहीं है तो फिर वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29. Clear or not? Shivani, is it clear or not? Sir, clear. सबको कोई किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, ओके. No. ठीक है, ओके, ठीक है. So now anyone can read the 30th question, last question of this exercise. A solid cubical block of fine wood costs rupees 256 at rupees 500 per meter cube. Find its volume and the length of each side. Yes. A solid cubical block of fine wood costs rupees 256 at 500 per meter cube. Okay. Find its volume and length of each side. It's not very difficult question, just a little logical है, थोड़ा सा उसको समझ लेंगे हम. So now the last 30th question. So शिवानी, मुझे यहाँ पर बताओ कि
इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? What information you get from this question? शिवानी को अगर नहीं पता चल रहा है तो हम फिर किसी दूसरे से पूछेंगे. Sir, I don't know. ओके गुड, कोई बात नहीं. श्रद्धा तुम बताओ जरा, श्रद्धा भी आज क्लास में है आई थिंक सो, Sir, she is not in class. बट मैंने देखा तो था उसका नाम आया था. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. नाउ आई वांट टू नो मंजीत आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि मंजीत टेल मी व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. Sir, this question tells that there is a solid cubical block of fine wood which costs rupees 256 at 500 per meter cube. क्वेश्चन Sir, if we want, sir, so the volume may be, sir, 256 divided by 500 meter cubed. पर मीटर क्यूब. नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो जो तुम बोलोगे तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हो, लेकिन द थिंग इज नॉट द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज द टोटल कॉस्ट. Sir, 1 meter cube it cost rupees Now listen please. 500. Now listen please. Total cost is equal to 500 per meter cube. Okay, and the unit cost is, see, this is the unit cost. 256 is the unit cost. यहाँ है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कॉस्ट रुपीज 256, मतलब जो कॉस्ट ऑफ द वुड उसके हिसाब से, और यूनिट जो हमारे पास जो मटेरियल है उसका जो कॉस्ट है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज द यूनिट कॉस्ट. दिस इज द ओवरऑल पर मीटर क्यूब. नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, उल्टा लिख दिया यहाँ पे. 50 नहीं, यहाँ पर ही है. टोटल कॉस्ट इज 256 256. and the unit cost is 500 meter, sorry, per meter cube. ठीक है, टोटल कॉस्ट जो हमने वुड खरीदा है उसका जो टोटल कॉस्ट है दिस इज 256, एंड जो उसका यूनिट कॉस्ट है, जो रेट दिया हुआ, रेट इज बेसिकली कॉल्ड द यूनिट बिकॉज इट इज अ पर मीटर क्यूब रेट. so this is called a total this is the unit cost and this is the total cost जितने का हमने वुड खरीदा है. क्लियर? इज इट बी क्लियर और नॉट? सो जब भी कभी भी हम कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 500, जैसे सपोज ये दिस इज सपोज्ड है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ. सो कॉस्ट ऑफ 0.2 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करके ऐसे निकालेंगे ना हम. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं तो दैट इज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कॉस्ट होता है. ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है? दिस इज द थिंग. ये मत देखो, अब ये देखो यहाँ पर कॉस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कॉस्ट होता है. सो इट मीन्स कि अब अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो इसका मतलब हो जाएगा कि कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट जो भी हमें लगेगा वो डिवाइड बाय यूनिट कॉस्ट, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब वो मंजीत सॉल्यूशन बता रहा था, लेकिन इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है वो ये मिली है. सो फॉर दिस वी कैन फाइंड द वॉल्यूम बाय यूजिंग द फॉर्मूला. नाउ द वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब तो तुम्हें पता ही चल गया, 256 अपॉन 500. तो मुझे कोई इसका आंसर बताएगा कितना आएगा? Anyone please tell me what is the, और एक काम और कर सकते हैं हम, इसे मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये हो गया हमारा 1000, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 1, 10 1 11 का 1, 5. इट मीन्स दैट 0.512 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम.
ये समझ आया Yes, किसी sir. को कि नहीं आया समझ? ये होता है, ये कभी हमें कैंसिल करने में प्रॉब्लम है और हमें नीचे 500 दिख रहा है तो हम उसे ट्वाइस कर लेंगे तो 1000 हो गया और फिर उसके बाद हमने उसमें डेसिमल सेट कर लिया। क्लियर? नाउ द वॉल्यूम इज 512 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे को पता है कि नाउ द वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? साइड क्यूब इज इक्वल टू 0.512। सो साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 0.512। किसी को मालूम है कि 512 किसका रूट किसका क्यूब रूट होता है? जीरो पॉइंट एट, मतलब 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है। क्यूब, सॉरी क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट होता है 512। क्यूब रूट उसका 8 होता है, या क्यूब ऑफ 8 इज 512। तो नाउ द साइड इज 0.8 मीटर। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. so today there is no homework. You can just finish your previous homework, and till till this exercise 20A I will include in PT9. Clear? कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। मैं अभी PT9 का तुम्हें सिलेबस बता रहा हूँ। द सिलेबस फॉर PT9 इज 18, 19 and chapter 20 till exercise 20A. ठीक है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? Okay, sir. कोई कंफ्यूजन है तो मुझे No. No, बताओ। sir. ठीक है? और you have to finish whatever the homework I will given, always I will give I give in the sorry, I write on the board. So today there is no homework, you have to finish. Tomorrow I will start exercise 20B. Then there is a homework you can include. So for making मतलब assignment जब मैं create करूँगा तो मैं वहाँ पर लिख दूँगा exercise 20A and 20B. Is that clear? Yes, 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 sir. sir. So you have to submit exercise 20A. What is the homework that may be given in the exercise 20A, and till Friday, how much we finished in exercise 20B, that all include in the